So today in this video we'll see what is bubble sorting. So sorting से related काफी questions पूछे जाते हैं DSA में interviews में beginner level के लिए. So you should know what is sorting and how to sort an array. And काफी सारी methods होती हैं word sorting, bubble sorting. So in this video we'll see what is bubble sorting and how it works. So let's say I have an array nums and इसमें elements हैं which are not in a sorted manner. So मैं बिना inbuilt function use किए इस array को sort करना है. So let's see how we can do that. The nums I'll iterate it twice using a nested for loop. Range of length of nums -1. So why I'm doing -1 is because कि मुझे लास्ट वाले एलिमेंट तक नहीं जाना है, मुझे लास्ट के पहले वाले एलिमेंट तक ही जाना है, तभी मैं उसके आगे वाले एलिमेंट और उसमें कंपैरिजन कर पाऊंगा कि कौन बड़ा है. एंड इफ मेरा करंट एलिमेंट बड़ा हुआ तो मैं वैल्यूज को स्वैप कर दूंगा. सो लेट्स राइट द कंडीशन फॉर दैट. इफ नम्स ऑफ j इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ j+1. सो ये मेरा करंट एलिमेंट हुआ. लेट्स से फर्स्ट टाइम इटरेशन हुआ तो ये हुआ 7. इसके आगे वाला एलिमेंट दैट इज 2. तो 7 इज ग्रेटर देन 2, यू नो दैट. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को स्वैप कर देंगे. नम्स ऑफ j nums of j+1 is equal to nums of j+1 nums of j. So यहाँ पे मैंने यूज़ किया है nested for loop. Here I have swapped the values. So let's print our array. देखते हैं कि sort हुई है या नहीं. So when I run this, we'll get a sorted array. Here it is.